होना चाहिए कि उसके रहने से फायदा हो, उसके नहीं रहने ऐसे टाइम पास criteria we decide about it. But rather you are not an MD, you are probably not very keen in I'm discussing the same point. I'm also discussing the same point. पहले मेरे को सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं, it's okay. Now, for that matter, you will agree with me that A had insurable, listen, A had insurable interest in JetBlue when the policy was taken. A had no insurable interest in JetBlue when she died. Do you agree with this? Okay. Now the question emerges: insurable interest to hona chahiye, but at what time insurable interest should be? So the principle is, in insurable interest, the insurable interest should be at the time of taking of policy. Again, at the cost of repetition, insurable interest should be at the time of taking of policy in life insurance, but at the time of loss in marine insurance and at both times in fire insurance. Quite possible कि एक व्यक्ति ने A ने जो है उसके डेफिनेटली प्रेजेंटेशन इंश्योरेंस करवा दिया या ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करवाते हैं, इसके बाद उन्होंने वो माल B को बेच दिया है, B को बेचने के बाद उसमें आग लगी, माल वहीं पड़ा था या ट्रांजिट आग लगी, उस अवस्था में इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंसिडेंट के टाइम पे नहीं है और इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेने के टाइम पे नहीं किसी को नहीं मिलेगा। This is these are the basic laws. हालांकि इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत हैं और वो इफ्स एंड बट्स जो है वो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे होगा, बट अदरवाइज please take care that insurable interest of a person should be at the time of taking of policy in life insurance, at the time of causing of loss in marine insurance, and at the time of taking of policy, as well as at the time of the loss caused in case of fire insurance. This is how what actually I wanted to say regarding insurable interest of the goods insured or the person insured. Next, then law of indemnity is to compensate, and compensate presumes that there should be damage first. Second presumes that it cannot exceed the actual damage caused, and that actual damage cannot be more than the sum insured also. कई बार ऐसा होता है जैसे 10 जाता है 12,000 का इंश्योरेंस करवा लिया, 12 का 12 चल गया। दूसरे सेक्शन में पूछा गया था कि सर इतना बार लोन होगा तो 10 का माल है 12,000 का बीमा करवाया, ज्यादा इंस्टॉलमेंट दे नहीं है, प्रीमियम और इसके बाद 10 से ज्यादा कंपनसेशन मिल नहीं सकता। This so happens sometimes on account of vested interest by proposing or by showing that the goods value something more than that. इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है